So the last topic of quadratics, which is hidden quadratic equation or conversion to quadratics. So what happens in these questions? Let's just take a look at part A. This is clearly not a quadratic equation. The highest power of x here is 6, and we don't directly know how to solve this. However, it is possible to convert this into a quadratic equation. How do we do that? Through substitution. So we have x power 6 plus 7x cubed plus 10 is equals to 0. We notice that 6 is double of 3, right? Whenever that is the case, that means this is a question on hidden quadratic equation. One power is 3 and the other power is double of 3. That means we can say that let this be, let's say y, let x cubed be y equals y. Then x power 6 would be y square. Okay, why is that? From indices of O levels, if we square both the sides, let's square both the sides. This is squared and this is squared. So this becomes right hand side becomes y square. And remember the rules of indices, if we have a m bracket n, then that's equals to a m times n. So that would become x power 3 times 2, which is 6. So if y is x cubed, then y square is x power 6. Now I'm going to replace the x in terms of y. I'm going to write the x in terms of y. So x6 is y square plus 7y plus 10 is equals to 0. Okay. Now this is a quadratic equation that can be solved by factorization. 5 और 2 से हो जाएगा. So y square plus 5y plus 2y. X equals to x plus 5. I guess. Very correct. So y plus 5 plus 2, y plus 5. Negative आएंगे answers. So y plus 2 and y plus 5 equals 0. So we're getting y equals minus 2 and y equals 5. Okay, stylus. Minus 5. Minus 5 and minus 2, yes. So minus 2 and y equals minus 5. Okay. Now this question is asking us, the question is in terms of x. So our final answer must be in terms of x. So y will be replaced with x cubed now. So x cubed equals minus 2 and x cubed equals minus 5. So we can take cube root on both sides. So x का एक answer है cube root of minus 2. And the other answer, just a second. So take cube root on both sides. X equals cube root of minus 2. And x equals cube root of minus 5. That these should be our two final answers of the hidden quadratic equation. Any questions here? No. Okay. So let's do part B now. I hope I can clear the board. Okay, part B.
So part B is, I'm going to rearrange it slightly. I'm going to write the biggest power first, minus 3x power 4, then plus 11x square, and then minus 4 plus 4 equals to 0. Also, I'm going to multiply both sides with -1. Why am I doing that? Because the ताकि highest power is negative. Yes. So उससे वो first coefficient positive हो जाएगा. जरूरी नहीं होता ये करना, but it makes the working a lot more simpler. So the first term is now positive and the other terms are now negative. Okay, what should I write? Let what is equals to what? X square equals to y. Yes, that's correct. Let's x square equals y. And since the other one is double of the first power is 2 and the other one is 4, that means that's going to be y square. And y square would be x power 4. So the quadratic equation becomes 3y square minus 11y minus 4 is equals to 0. And let's solve it here. I think we can factorize it. Direct calculator se kare. Y minus 4, y plus 1 over 3. Okay. So y equals to 4 and y equals to 1 minus 1 over 3. Acha, theek hai. However, we can't just leave it there. 1 is 4, x equals 4, sorry, y equals 4 and 1 by 3, right? Minus 1 over 3. Minus 1 by 3. Okay. Acha. Here we have shown the examiner that we haven't done the intermediate working and we have used the calculator. That means definitely marks cutenge और ठीक ठाक marks तो cutenge. इस पहले वो करेंगे ना y minus 4 और y plus 1 over 3. Exactly. Now to show the examiner कि ऐसी बात नहीं है, हमें ये आता है और हम थोड़े extra smart हैं. So what we do, take 4 to the other side, it becomes y minus 4 first bracket. For the second one, you first take 3 to the other side so that it becomes 3y. Then you take minus 1 to the other side plus 1 equals to 0. इसका अगर ये नहीं करोगे तो वो मेथड मार्क नहीं मिलेगा और फिर ये एक्यूरेसी मार्क भी नहीं मिलेगा. एक्यूरेसी मार्क खाली तब मिलता है जब मेथड मार्क मिलता है. So if you don't do this, तो इसके भी नहीं मार्क मिलेंगे और आगे तो फिर डेफिनेटली नहीं मिलेगा. तो अगर आप skip step कर रहे हो, you have to do it very intelligently. Okay. So now let's replace y with what? X square. Yes, x square is 4 and x square is minus 1 by 3. What do we do here? How do we find x? Plus minus 2. Yes, you take square root of 4. तो इधर तो आ गया plus minus 2 और इधर क्या आया? माइनस बाहर ले सकते हैं. नहीं, अंडर रूट के अंदर ही आएगा नेगेटिव. अच्छा ठीक है. Can we take negative square root of a negative value? No, we can't because the calculator will say math error. So you write no solution, no real solution. No real solution for this one. You can't square root. और वैसे you can't square root of a negative number. और वैसे भी देखो, can you square a value and get a negative answer? Is that possible? क्या आपने किसी चीज को स्क्वायर किया और उसका आंसर नेगेटिव आया? That is not possible. जब भी हम कुछ स्क्वायर करते हैं, वो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो, आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है. सो इसलिए आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं नो सोल्यूशन. नॉट कोई ऐसी एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसका स्क्वायर लें तो नेगेटिव आंसर आए. ठीक है. सो द आंसर वुड जस्ट बी प्लस माइनस 2 ओनली. Let me just check the answer as well. Yes, that is correct. Okay, now let's quickly do part C.
Part C. Okay, what should be y here and what should be y square? अबू बकर आप बता सकते हो? Miss, let x power 4 is equals to y. ठीक है, बिल्कुल सही. Part C, let x power 4 equals y. अब इसको डायरेक्टली करते हैं. We get 6y square minus 13y plus 6 equals 0. Let's solve it in the calculator. 6 minus 13, 6. We get 3 by 2. 2y minus 3. Okay. 2 by 3. And we, ये है ना? यही Take है. it one step back. That's the first bracket, and 3y minus 2, that's the second bracket, equals to 0. Now let's replace y with x power 4. X power 4 equals 3 by 2, and x power 4 equals 2 by 3. How do we find the value of x from x power 4? Fourth root. Yes, exactly, fourth root. 4 को खत्म करने के लिए you have to take fourth root on both sides. And remember, whenever you're taking an even root, like square root or fourth root or sixth root, तो plus minus Plus आता है. Must write plus minus with your answer. Plus minus, plus minus. डेसिमल में लिख सकते हैं. Probably अगर क्वेश्चन में कहा नहीं है कि एग्जैक्ट आंसर दो. आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इन क्वेश्चंस में आएगा कि एग्जैक्ट आंसर दे, वरना लिख ठीक सकते है. हैं करेक्ट टू 3 डेसिमल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. पार्टी Miss, काफी नहीं है आज के लिए. नहीं, अब ये नहीं होगा. सॉरी, योर गुड डेज आर ओवर. अब हम आखिरी मिनट तक जाया करेंगे. 5x power 4 plus 10x square plus 2 is equals to 0. ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद होमवर्क मिलेगा. मिस आप इसकी जगह ये पार्ट जे या के करा देंगी. ये हाँ वाला जी, आगे समझ. चलो ठीक है, फिर करा देते हैं. असल में इस वाले का आंसर नो सोल्यूशन लिखा हुआ था, सो आई वांटेड टू सी कि क्यों आ रहा है नो सोल्यूशन, बट यू विल डू इट एज होमवर्क. ठीक है, लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन. ये होमवर्क में करोगे डी, मैं और बता दूं जस्ट सेकंड. डी होमवर्क में करोगे और एफ होमवर्क में करोगे और आई गेस आई होमवर्क में कर लेना. ये 3 होमवर्क में करना है. एंड आई एम गोइंग टू डू विच वन फॉर यू, जे और के. इट्स प्रिटी सिंपल. जहां पावर डबल हो रही है दैट मीन्स कि यहाँ हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्या पावर डबल मिस हो ये रही है? के वाला तो मिस के समझ आ गया. आप जी करवा दें. ठीक है, just quickly, k में क्या होगा? The first one is going to be y square plus 3y minus 5. क्योंकि एक पावर है x पावर हाफ. नहीं मिस सॉरी. हाँ, बोलो. मिस बात सुने. मिस बोलो. मैंने कहना था के समझ आ गई है. आप जे करवा दें. ठीक है, मैं करा देती हूँ. मैं बस k का रिकैप सा, मतलब बस समरी सी बता रही हूँ. Okay, I hope you both understand that ओके. it's going to be y square plus 3y minus 5. ठीक है, in fact k भी होमवर्क में करोगे. ठीक है, मैं j करा रही हूँ. j में बताओ कि y क्या होगा और y स्क्वायर क्या होगा. जो पावर डबल हो रही होती है वो y स्क्वायर होती है और दूसरी वाली y होती है. इसमें y क्या है और y स्क्वायर. 3/2 जो है वो y स्क्वायर होगा. Yes, because it's double of 3 by 4. Look, when you double 3 by 4, when you multiply it with 2, what do you get? You get 3 by 2. ठीक है, बकर? So that's why it's going to be 2
y square minus 3y minus 8 is equals to 0. So let's solve it in the calculator quickly. 2 minus 3 and minus 8. We get ये quadratic formula से हो रहा है. You can't solve it with factorization. Possible नहीं है. Factorization हो ही नहीं सकते. So let's quickly use quadratic formula. Minus b plus minus square root b square minus 4ac by 2a. बस खत्म हो गया. मैं आ Okay. So the first answer we're getting here is 2.886. And the other answer that we're getting is minus 1.3860. Okay. Y has to be replaced with क्या था हमारा y? Y was x power 3 by 4, the smaller power. So let's do that. That's a good question to ask. So now y is actually x power 3 by 4. Now how do we get x from here? What do we multiply, or what power do we take on both sides? Yeah, what root we take on both sides? See, 2.886 power 4 and cube root. but फिर वो नहीं, just that, no. रूट ओवर पावर नहीं होता होता है लेकिन ये लाइक 3 अगर it's 3 by 4. मिसाल हाँ 12 रूट ले लेंगे. नहीं, 12th रूट तो नहीं लेते. अगर 12 रूट तो तब लेते अगर यहाँ x पावर 12 होता, तो फिर आप 12 रूट ऑन बोथ साइड लेते. अच्छा, असल में रूट होता क्या है? अगर आपके पास x स्क्वायर हो, समझा के आपके पास x स्क्वायर हो, तो आप स्क्वायर रूट लेते हो. स्क्वायर रूट क्यों लेते हो? क्योंकि स्क्वायर रूट एक्चुअली पावर हाफ होता है. तो वो यहाँ पे ये कट हो जाता है और आपके पास 7 power half is square root of 7. Similarly, when you have x cube and I ask you to take cube root on both sides. Why do you take cube root on both sides? Because cube root is actually reciprocal of 3. So you're actually taking power 1 by 3 on both sides. So now when you अच्छा have नहीं हाँ, now when you 2.886 हम्म क्यूब उसका फोर्थ रूट लेंगे. फोर्थ रूट लेके क्यूब कर सकते, उल्टा करना कि मैं उल्टा अच्छा ठीक. नहीं नहीं नहीं, 4/3 करना है. यस, क्यूब रूट लेके पावर 4 कर लेंगे. तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग? यू टेकिंग रेसिप्रोकल पावर ऑन बोथ साइड्स. सो 3/4 का अबू बकर रेसिप्रोकल क्या होता है? -4/3. हाँ, तो आपने ना 4/3 पावर बोथ साइड्स पे ले ली. यहाँ पे भी 4/3 और यहाँ पे भी 4/3. सो ये राइट वाली तो कट गई and your answer will be 4/3 power of 2.886 and same for the other end. इसका एक वो भी तो लाइक मतलब आई गेस सेम ही होता है लेकिन एक हम रूल पढ़ते हैं लाइक इंडिसेस लाइक फ्रैक्शनल इंडिसेस में कि हाँ, it's the इट्स same. पावर ओवर रूट. Yes. क्या over root? Sorry? Over root. So 3 would be the power or 4 would be the root. Exactly the same thing. Right. Okay. So I'm taking reciprocal power here as well on both sides. Actually आप reciprocal power ही ले रहे होते हैं हर केस में भी, square root में भी, cube root में भी, 12th root में भी. So it's the same thing. Okay, so can you give me the two answers? X equals what and x equals what? Uh, 1 point for minus 1.3860 उसका आ रहा है
1.5453. Hold on, ये हम कौन सा पार्ट कर रहे थे? We're doing part J. Let me check the answer of J at the back. J के आंसर एक 4.22 लिखा हुआ है और एक 1.55 लिखा हुआ है, ये नहीं आ रहे हमारे आंसर्स। 1.5453 आ रहा है। ओके, बस होने बात। पावर 4/3 gives 4.10। बस हमें 2 मिनट, ये नहीं आ रहे हमारे आंसर्स। आंसर्स आर स्लाइटली डिफरेंट। 4 मिस पॉइंट आसपास है तो सही है। हाँ हाँ हाँ, आपका दिल है बस क्लास खत्म। अच्छा, 8 सेकेंड। And the other one is coming out to be what? I'll double check whether there's something wrong in my working or maybe worksheet बनाते वक्त गलत answers लिखती हूँ, तो I'll get back to both of you. For now, these are our answers. एक तो सही आ रहा है 1.55 rounded, ये तो बिल्कुल सही आ रहा है 1.555। अच्छा, slightly off है, I'll check and get back to you on that. क्या गलती किधर हो रही है? ठीक है, that's all. And remember to do the homework questions, especially you, Abu Bakr. ठीक है? ओके मिस, All right. सही है। See you tomorrow. Allah Hafiz.